Now, moving on to the next question, question number 24. Consider the following statements regarding Dhrupad, the oldest form of Indian classical music that exists today. First, it used Sanskrit. Second, it is devotional in nature. Third, Raja Man Singh, king of Gwalior, is known as the originator of the Dhrupad style. Which of the statements given above are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2 only, or D. 2 and 3 only. Now, the question is from Art and Culture, and it is asked about Dhrupad, the oldest form of Indian classical music. Now, the oldest form of Indian classical music that exists today is Dhrupad. So the statement is correct. The language of Dhrupad used mainly medieval Hindi or Brij Bhasha known as Madhya Deshiya between the 14th and 16th century. So the first option is not correct. The language is not Sanskrit, but it is Hindi or Brij Bhasha. The birth of Dhrupad coincided with the Bhakti movement of Vallabh Sampradaya and resultantly was devotional in nature. So the second option is correct. It was devotional in language, devotional in nature. Raja Man Singh, king of Gwalior and a musician and a great lover of music, gave Dhrupad immense encouragement and introduced many refinements. This came to be known as the Darbari Dhrupad. On account of this contribution, he is known as the originator of the Dhrupad style that is followed even today. So the correct answer to this question is second statement and third statement. First is not the correct one, so the correct answer is 2 and 3 only, which is given in the option D. भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्राचीनतम रूप ध्रुपद जो अभी भी प्रचलित है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसने संस्कृत भाषा का उपयोग किया। दो, यह प्रकृति में भक्ति परक है। तीन, ग्वालियर के सम्राट राजा मान सिंह ध्रुपद शैली के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी केवल दो और तीन। ध्रुपद में जो भाषा का उपयोग किया गया है वह संस्कृत नहीं है, बल्कि हिंदी और ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। तो कथन एक सही नहीं है। इट इज यह दूसरा भक्ति प्रकृति में भक्ति परक है, यह भी सही है। ग्वालियर के सम्राट राजा मान सिंह ध्रुपद शैली के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, यह भी कथन सही है। अतः इसका सही उत्तर है डी केवल दो और तीन।